Hello everyone, welcome back to the CNA daily newspaper analysis. Today we have got the following topics to discuss, okay, which says about the deepened adoption. We'll study a depth and the adoption strategy in our country, about some of the employment scenario of our country, the digital currency, some related to the Antarctica's crumbling edge, China's assistance to Nepal, and breaking the taboo that is a monopoly of India's alignment from a non-alignment to some of the multi-alignment today. Okay, so let's start with this topic at the very first, which is known as the deepened adoption. So today, if you directly see towards our country, okay, we can see that today the very news of dipping in the adoption rates in our country has slowly increased. If you see about the meaning of adoption, I can directly say that adoption is the process through which a person takes the parental responsibility of a child who is not biologically his or her child, and thereby the child becomes the lawful child of his adoptive parents with all the rights, privileges, and responsibilities that are attached to the biological child. Okay, तो ये एक क्लियर कट डेफिनेशन है किसका, एडॉप्शन. अगर मैं देखूं रीजंस ऑफ एडॉप्शन, दैट व्हाई इन एवरी कंट्री, व्हाई the people, why the very couples are directly adopting their respective child, तो इसका रीजंस है. क्या क्या रीजंस हो सकता है? It is the main reason to overcome infertility, to become parents, to help a child in need, to avoid pregnancy complications, to avoid passing genetic disorders or diseases, love for children, balancing population growth. ये सब रीजंस होता है किस चीज का? ये डायरेक्टली एडॉप्शन स्ट्रेटजी का. एंड अगर मैं बेनिफिट्स देखूं एडॉप्शन का, देखो, फॉर चिल्ड्रन द बेनिफिट्स आर व्हाट? द चिल्ड्रन हु इज वेरी लोनली, हु डज नॉट हैव गॉट पेरेंट्स, तो उसको एक लविंग फैमिली मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, एक चांस मिलता है टू फुलफिल हिज रेस्पेक्टिव ड्रीम्स जस्ट लाइक अनदर चाइल्ड. और पेरेंट्स को द जॉय ऑफ स्टार्टिंग अ फैमिली, opportunity to raise and love a respective child, enables them to become parents when they may not have been able to otherwise. तो ये सब रीजंस होता है, ये सब डायरेक्टली एक बेनिफिट्स होता है एडॉप्शन. टुडे इफ यू कैन सी दैट हु आर द रेस्पेक्टिव पर्संस हु कैन अडॉप्ट अ रेस्पेक्टिव चाइल्ड, तो अगर हम लोग एडॉप्शन रेगुलेशन रूल ऑफ 2017 को देखें, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 को देखें, दिस इज डायरेक्टली इशूड बाय whom? The Ministry of Women and Child Development. And इसमें there are various categories, there are various associated principles which directly makes a person or a couple to directly adopt a child. तो अगर मैं बोलूं that which child can be adopted, तो यहां पे भी वो definition देके बैठे हुए कि the child could be an orphan, abandoned, surrendered child declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee. Okay, or a child or a children of the spouse from an earlier marriage surrendered by their biological parents. So ये सब categories में I can directly adopt, or a couple can directly adopt a respective child. So today, for the protection of this child adoption, we can see there are various stakeholders that are involved. It may be the CARA, that is the Central Adoption Resource Authority. It may be the SARA, State Adoption Resource Agency. It may be the SAA, that is the Specialized Adoption Agency. It may be the Authorized Foreign Adoption Agency, उसको बोलते हैं हम लोग AFAA, AFA. Then we have got also District Child Protection Unit, that is the DCPU. So through these particular stakeholders, we can directly regulate and monitor the adoption of the child system in our country. और इसके बेसिस पे हम लोग का लॉ भी है. We have got various number of laws that directly govern the adoption in this country. The Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956, ये एक लॉ है. The Guardian and Wards Act of 1890, ये भी एक्ट है कि rightly directly from the British times. Okay, so in all these particular phenomena, we could see that the adoption in every country must be regulated by some of the governmental norms, so as to regulate the number of adoption practices in our country. तो आज यहाँ पे ये न्यूज क्यों आया है? Because अभी ये क्या हो रहा है? There is a particular dip in the adoption phenomena of the couples in our respective country. ये adoption phenomena क्यों decrease हो रहा है? Because today we can see everyone loves
to have their biological child. Okay. So today we can see that around 12 to 15% of the couples of reproductive age are disturbed by infertility. And there are various reasons for this infertility. But today we could overcome such number of infertility in various number of processes, be it the IVF, that is the in vitro fertilization. Okay, एक होता है IVF, in vitro fertilization. दूसरा होता है ZIFT, इसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट इंट्रोफैलोपियन ट्रांसफर. एक होता है GIFT, इसको बोलते हैं हम लोग गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. So we have today got various number of associated things, associated ideas or associated techniques with the development of technology, with the development of science. And because of that, the very infertile couples, it may be a male, it may be a female. So they are directly going with all three such number of technological advancements to produce their respective child. Because everyone wants their child or a ward to be with their natural thing. Supposedly, they want a biological child of them. Because with adoption, they cannot directly say that that is their respective biological child. So because of all such number of techniques that we have seen today, there is a particular dip in adoption. And because of this dip in adoption, we can see that such number of surrendered child, such number of orphan child are very much prone to trafficking. तो इसी के लिए ये particular news is directly in this today's paper. And these are the things that are associated with the adoption techniques that what we have today. Okay, so ये था अपना dip in adoption वाला issue. Okay, coming to the next about youth employment. Today, if you see in the country of India, okay, we have got various problems associated to the employability. Okay, according to the census 2011, क्या देखते हैं हम लोग कि every fifth person in India, that is a youth between 15 to 24 years of age, is directly what? An unemployed. Even UNICEF, which is a special program under the United Nations, even they are very much devoted for every form of employability to a person between the working age group. Okay, and thereby we can see that today this number of programs, be it directly from the UNICEF, अगर मैं UNICEF का एक initiative देखूं, which is known as UWA, okay, UWA, so this is a particular initiative of the UNICEF. ये directly हम लोग का इंडिया का एक total एक chapter है, like it is directly known as the respective department of Ministry of Child or Ministry of Labor and Employment in association with the UNICEF, not the child, it is the Ministry of Labor and Employment, and respectively the UNICEF directly collaborated today for every form of job practices in our country. Okay, so you can see that today in this particular category, in this employment category, the government is directly focusing much more towards it. Okay, supposedly if I say about the National Youth Policy of 2014, which directly provides a holistic vision for the youth of India, directly to empower them and to achieve their full potential so as to make the nation in a very rapid growth. अगर मैं उसके बावजूद भी I have to see, I can see about the Prime Minister's Employment Generation Program, PMEGP 2008 में शुरू हुआ था, which led to the establishment of the MSMEs, micro, small and medium enterprises. अगर मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में सोचूं, so that is directly started in 2015, that directly provided loans up to rupees 10 lakh. And it directly focuses on what? Self-employment. Self-employment पे फोकस किए थे. फिर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, launched by Ministry of Labor and Employment, for directly incentivizing employers for promoting employment generation. लोग बोलते हैं, आजकल सरकारें बोलती है, आजकल लीडर्स बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, अपना होम मिनिस्टर बोलते हैं कि like you should not be an employment seeker, rather you should directly create yourself to be an employment giver. तो स्टार्टअप्स का जो कल्चर है उसको फोकस ज्यादा कर रहे हैं. So today we can see that still, because of some of the skill that is very much required for such number of employabilities, जैसे पहले हम लोग चलाते थे this MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें अनस्किल्ड वर्कर्स लगते थे. लेकिन इफ आई सी टुडे अबाउट पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन हुड लाइवलीहुड मिशन,
ये सब क्या कर रहे हैं? They are directly in focused to directly train such number of youth who is directly in the working age group for their respective employabilities. Okay, so in such number of ways today, we are directly seeing that though the government is very much focused towards making a good employability conditions to the people of India, to the youth of India, but ये जो कोविड पैंडेमिक आ गया था, इसको बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक पूरा जितना भी प्लान्स था हम लोग का, ये सब धाराशायी हो गया. Okay, it directly shuttered down because of the lockdowns, because of the less number of economical growth that we can see. तो इसीलिए we can see that today that the youth employment totally is declining. Okay, आज रोजगार कम है, people are directly in losses because our economy is also trying to directly maintain its particular growth rates. So in every perspective we could see that हम लोग का जो youth employment ratio है, तो ये धीरे धीरे करके we can see it's totally is declining. So in every perspective we can see that we have to collaborate. Government is directly doing something, but government needs to collaborate with various number of career services so as to make such number of collaborations, be it with UNICEF or be with some other countries, so as to train our respective individuals for their respective employabilities. Okay, तो ये एक particular news था about youth employment. Okay, coming to the next one about India's digital currency. जब मैं digital currency की बात बोलूं, then we can see that India is very much focused today, and even in the budget of 2022-23, the government of India announced that it will the Central Bank of India, that is the Reserve Bank, obviously, it will directly issue what, a digital currency as early as 2022-23, and it is one of the crucial decision that most major economies are refusing to make it in a hurry. ये क्यों नहीं कर पा रहे? Just because of the prevalence of today's of cryptocurrency. तो आज क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत लोग डिजिटल पेमेंट्स में डिजिटल करेंसी प्रोड्यूस नहीं करना चाहते. Today we do have various arguments in favor of digital rupee claim that an electronic representation of India's legal tender will boost digital economy. Okay, तो यहाँ पे हम लोग बहुत देख सकते हैं कि we will boost our respective economy, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बहुत है. There are various number of risks involved to directly make a central bank digital currency. So if I can directly say that what will be a digital rupee, ये digital rupee होता क्या है? So we can directly say that a central bank digital currency will use an electronic record or digital token to represent the virtual form of a flat currency. And this particular digital rupee will allow क्या? It will help users to transfer purchasing power from deposit accounts into their respective wallets. Okay, which will, like cash, will be something like the liability of the respective wallets where we are directly depositing the money. So इसके आर्गुमेंट में बहुत सारा फेवर्स में बहुत लोग हैं कि लाइक वर्ड मैंने बोला था कि इसका कन्वीनियंस ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, इसका रेगुलेशन अच्छा हो जाएगा. Okay, then it will also mitigate the risks of losses that Indian depositors faces. Okay, consumers may also find an e-rupee to be a safer alternative to bank deposits. Okay, because today we see that around $76 trillion rupees is annual real-time payments via apps like फोन पे, गूगल पे, पेटीएम. इसमें 76 ट्रिलियन एनुअल हम लोग का एक पेमेंट मेथड होता है. सो दिस ई करेंसी कुड कीप द नोशन ऑफ कन्वर्टेबली ग्राउंडेड इन डेली रियलिटी, लेकिन इसके एसोसिएटेड हम लोग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी है. टुडे इफ यू सी दैट इफ ई कैश बिकम्स वेरी पॉपुलर and RBI places no limit on the amount that can be stored in the mobile wallets, weaker banks may struggle to retain some of the low-cost deposits. Okay, even because here some of the anonymous cash can also be parked because this CBDCs will be designed in such a way that the central banks will be able to trace the spending. So today we have seen that there are other countries which are directly of the view that we will introduce digital currency. Okay, even some of the high well-off technological countries like Japan, even Japan ने बोल के रखा है कि हम लोग डिले करेंगे क्या, the introduction of digital currency. So how India can directly go for digital currency today? Because India does not have got such number of expertise today. India का जितना लाभ होगा ना, उससे ज्यादा क्या होगा, losses होगा if you use this digital currency. Okay,
So therefore we can see that we can implement such, but with a proper well evaluated implementation हम लोग का जरूरी है, because once it becomes efficient, तो उस टाइम हम लोग का कैश यूजेस इन इकोनॉमीज लाइक इंडिया, ओके, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से पहले हम लोग का कैश यूजेस बहुत ज्यादा था, लेकिन आज हम लोग का थोड़ा बहुत घट गया है, और जब ई करेंसी आएंगे तब तो थोड़ा पूरा खत्म ही हो जाएगा. Okay, so therefore some of the methods like well evaluation, okay, strict KYC norms, that is the know your customer, okay, लेकिन अगर KYC नहीं होगा तो ये जितने भी ई करेंसीज होंगे ये क्या होगा, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में ज्यादा यूज होगा. Okay, so therefore the role of the RBI is very much certain, and therefore the ideal idea of this legal currency or this digital currency should come in phases. इमीडिएटली स्टार्ट करने से हम लोग का लॉसेस ज्यादा होगा, हम लोग का यहाँ पे डायरेक्टली एक इन्वॉल्वमेंट होगा, इवन द अदर पार्टीज हु डायरेक्टली वांट्स दैट इंडियाज डिकेरल ग्रोथ रेट शुड डायरेक्टली कम डाउन. ओके, तो ये था हम लोग का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल करेंसी. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एंटार्क्टिका क्रम्बलिंग एट द एज. ओके, इफ आई गो विथ सम ऑफ द फीचर्स और सम ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द एंटार्क्टिका, मैं एंटार्क्टिका को क्या देखता हूँ? ओके, Antarctica directly encompasses land, island, and even oceans. That is south of 60° latitude. Okay, इसको हम लोग longitude बोलते हैं, इसको हम लोग latitude बोलते हैं. ठीक है, तो Antarctica encompasses land, islands, and oceans south of 60° latitude. And this region of Antarctica stores about 70% of the world's fresh water, and that too in the form of what? Snow and ice. Snow और ice में ये लोग preserve करते हैं. And we all know that average annual temperature ranges about -10 to -60. And the immense ice sheet is up to around 4.8 meter thick, 4.8 kilometer thick. And it contains 90% of the world's fresh water. And that is very much enough to raise the sea levels by around 60 meters if they were all to melt completely. So, इसीलिए today that we can see that there are various causes of melting this ice glaciers. बहुत सारा causes हो रहा है. क्यों? We can see in the very first number one, the human activity is the root of this phenomenon. Specifically because of industrial revolution, carbon dioxide, other greenhouse gas emissions, we have raised the temperatures even higher in the poles. Burning of fossil fuels has even resulted in the building up of these greenhouse gases, which trap the heat in the atmosphere. Also, the oil and gas drilling that emits methane, which is the main contributor of this natural gas, is another contributor. Deforestation is on the rise across the globe, which is directly having a negative effect like a rise in sea levels. So in every particular aspect, we can see that the impact on this Antarctica is directly a domino effect that is done in the mainland areas, which have got suitable climates. As scientists बोलते हैं कि like the sea levels are rising 0.3 inches or 3.2 millimeters every year. Okay, इसको मैं अगर बोलूं तो 0.3 inches बढ़ रहा है और 3.2 millimeter it is directly getting rise. And the rise has been rapid in the recent years, which has threatened how this lying island and these coastal cities will be submerged underwater in the coming times. Today, the world is witnessing more frequent extreme weather events like bushfires, cyclones, drought, floods. क्यों हो रहा है? Just because of this collapse of these ice sheets. And scientists have even said and predicted that the decade from 2014 to around 2023 has been predicted to be the warmest in more than 150 years. And scientists directly see it as a critical threshold for climate change. The scientists का concern है अभी कि they directly predict that if the climate change remains unchecked, the Arctic could be ice-free in the summers by the year of 2040. कितना दिन ही है 2040? ओके, अभी मान लो अगर 2020 है तो मान लो 17-18 साल में ही we will directly see that the Antarctica is totally क्या हो रहा है, एक पानी सा बन गया है, उसमें लोग टूरिस्ट करने जाएंगे, उसमें कार्गो शिपमेंट होगा. ओके, वहां पे गर्मी पड़ेगा अंटार्कटिका में. तो अगर 2040 में अगर वहां पे सर बर्फ पिघल गए, then every other city which is directly the coastal cities of every other country will directly be submerged under water. So ये predict किया है साइंटिस्ट ने, इसलिए causes of concern है. Okay,
So therefore, we can see that we needs to directly achieve some extraordinary response towards the climate change. ओके इसलिए हम लोग ने बहुत सारा चीज किया है कि लाइक इफ अभी जैसे हम लोग ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के डील में वी हैव डायरेक्टली सीन दैट हम लोग 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस रेंज में हम लोग का टेम्परेचर रखेंगे दैट इज डायरेक्टली कमिंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम सो टुडे एवरी कंट्री इज डायरेक्टली कमिटेड दैट इट विल नॉट it will directly keep the global temperatures increases within the period of 1.5 to 2 degree Celsius range. So to directly even you can see about this UN report. UN report में भी बोला गया है कि various other countries have even not stopped using. आज अगर US और developed nations का भी देखो तो even developed nations ही आज fossil fuels को use कर रहे हैं. What about the non-developed nations, developing countries? वो लोग तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और जितना यूजेस ज्यादा करेंगे उतना हम लोग क्या करेंगे we are directly adding more and more such number of emissions or greenhouse gases and CO2 or CO to the respective atmosphere. तो इसीलिए आज ग्लोबल इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं हम लोग यूएन क्लाइमेट एक्सचेंज फॉर क्लाइमेट चेंज COP COP conference of parties. So therefore these climate policies should be consistent even with the national policies of the respective countries. Because without directly implementing such number of national policies, no other countries, and without directly mandating such number of conferences in a legally binded way, we cannot directly stop such number of changes of the respective government. आज जैसे देखो ड्यूरिंग द ट्रम्प पीरियड यूएसए में उसने तो बोल दिया था कि क्लाइमेट चेंज से कुछ नहीं होता है इसलिए ही डायरेक्टली वेंट आउटसाइड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट डील लेकिन आज जब जो बाइडेन जी आए उसके बाद he directly entered USA again. तो ऐसे ऐसे अगर लोग आएंगे जो क्लाइमेट चेंज को नहीं मानते हैं then also it will be a very much detrimental to the respective world which will increase the earth's temperature and that will in turn decrease the sheet of ice that is directly covering the Antarctica. Okay, तो इसी का एक particular news है that is we can see in the coming times. Okay, चलो next पे आते हैं China's assistance to Nepal. Okay, थोड़ा बहुत IR के portions के साथ आता है. Okay, today if you see China, obviously, actually, Tibet. Tibet is a neighboring country of India, but since as Tibet a autonomous region and around China, so we can directly say that we have got borders with China. Okay, देखो, China and Nepal has got various interest with each other. Okay, बहुत ज़्यादा interest है. आज अगर मैं China's का interest देखूं in Nepal, देखो, although Nepal and India have open borders, people can move freely over here. We know, हम लोग को passport भी नहीं चाहिए. आधार लेके जाओ ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ यू कैन डायरेक्टली एंटर नेपाल ओके एंड इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी द फ्रीडम एज वेल एज मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज मच इजियर एज कंपेयर टू चाइना एंड टुडे चाइना वांट्स टू रिप्लेस इंडिया इन दिस पर्टिकुलर मीन बिकॉज जब पीपल टू पीपल एक्सचेंज ज्यादा होते हैं तब क्या होता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज ज्यादा होता है बिजनेस एक्टिविटीज ज्यादा होता है तो आज इंडिया को रिप्लेस कौन करना चाहता है चाइना सो एज टू डायरेक्टली एक्सेस द मार्केट ऑफ नेपाल तो ये पहला इंटरेस्ट है वी ऑल नो दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज चाइना ऑब्वियसली साउथ एशिया में नहीं आता है इट डायरेक्टली कम्स इन द ईस्टर्न एशिया तो इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज एंड हैज बिकम द लीडर ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज चाइना डायरेक्टली वांट्स टू कंटेन इंडियाज ग्रोइंग पावर एंड स्टेटस बिकॉज अगर इंडिया यहां पे बढ़ता चला जाए then it will threaten the very China's dream of becoming a superpower in this respective continent of Asia as well as in the world. तो इसीलिए ये लोग क्या करना चाह रहे हैं thereby they are directly wanting to maintain a balance of power in favor of South Asia and ensuring and they can only achieve if they ensures Nepal's active cooperation to prevent its competitors from using the country for any form of anti-China activities. So therefore we can see that if you directly go towards the northern border between Nepal and China, which is entirely located in Tibet, China believes that security cooperation with Nepal is very much essential to control the Tibetan affairs. क्योंकि आज अगर तिब्बत जो कि वहां पे लड़ रहे हैं वहां पे डायरेक्टली दे वांट्स टू डायरेक्टली सेपरेट आउट फ्रॉम द वेरी एरिया ऑफ चाइना के कंट्रोल से वो लोग जाना चाहते हैं अवे So we can see that कल परसों वो लोग वहां पे कुछ काम करते they even cross this Tibetan area and they come to Nepal side. तो जब दूसरा कंट्रीज में चले जाते हैं then obviously it is very much difficult to capture them. Okay, और नेपाल जैसा कंट्री hugely populated. Okay, छोटा सा कंट्री है लेकिन density of population is much more.
सो देयर बाय दे डायरेक्टली वंस दैट कल परसों मेरे को अगर तिब्बत रेफ्यूजीज को, तिब्बत जो एक्सट्रीमिस्ट है, तिब्बतियन जो रिवोल्यूशनरीज है, नॉट एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरीज, जितने भी रिवोल्यूशनरीज है, तो अगर मेरे को वहां पे उनको कंटेन करना है तो मेरे को नेपाल का कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि अगर नेपाल का कोऑपरेशन रहा देन नेपाल वहां पे ब्लॉक कर देंगे तो ये लोग भागेंगे कहाँ, तो इसको जाके पकड़ लेंगे। तो दिस आर द थिंग्स वेयर चाइना हैव डायरेक्टली गॉट इंटरेस्ट टुवर्ड्स नेपाल। यहाँ पे नेपाल का बेनिफिट क्या हो सकता है? फॉर नेपाल, चाइना इज अ पोटेंशियल सप्लायर ऑफ गुड्स एंड एड फॉर इट्स इकोनॉमिक रिकवरी। Today, we know that nearly half of the Nepal's population is unemployed and more than half is illiterate. At the same time, more than 30% of the Nepal's population lives in poverty. And to solve these internal problems of Nepal, Nepal needs to have some of the context with China to solve its poverty and unemployment problems. And because of this, Nepal and China will make progress in these negotiations and run counter to India's big brother approach. क्योंकि आज जितने भी नेपाली होते हैं, यू कैन फाइंड अ लॉट मेनी नंबर ऑफ नेपालीज डायरेक्टली वर्किंग इन इंडिया। तो चाइना इसी को रिप्लेस करना चाहते हैं। और कभी कभी नेपाल ये याद आता है कि लाइक कभी कभी इंडिया थोड़ा बहुत गुस्से में बोल देता है कुछ नेपाल को, दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये छोटे वाले को, बिकॉज नेपाल इज अ स्मॉलर कंट्री, हम लोग को अपना छोटा भाई, हम लोग छोटा भाई मानते हैं उनको। तो वो लोग जब हम लोग थोड़ा डांट देते तो वो लोग गुस्सा हो जाते कि ऐसा बड़े भैया का हम लोग का धमकी मत दीजिए, वी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ओके, वी आर ऑल्सो सॉवरेन। तो यही का, इसी चीज का फायदा कौन उठा रहा है? एक दूसरा आदमी, दैट इज चाइना। जैसे हम लोग का बीच में होता है कभी कभी भाइयों के बीच में, तो उसका फायदा कभी कभी दूसरा आदमी उठा लेता है, एंड दैट लीड्स टू अ वेरी गुड क्लैश बिटवीन टू ब्रदर्स। तो उसी का फायदा कौन उठा रहा है? चाइना उठा रहा है यहाँ पे। सो देयरफॉर वी कैन सी दैट दो द नेपाल चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बीआरआई के अंदर ही आता है, it seeks to end India's dominance on its trade routes by strengthening the ties with China today with respect to Nepal. तो ये दो इंटरेस्ट है विद दिस रेस्पेक्टिव पर्पस। लेकिन यहां पे इंडिया का कंसर्न क्या है? वी नो दैट इन व्यू ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रेटेजिक वेट बिटवीन चाइना एंड नेपाल, सिक्योरिटी डिप्लोमेसी कैन बी यूज्ड बाय चाइना एज अ टूल टू इंटरफेयर इन नेपाल्स इंटरनल अफेयर्स। चाइना अपना सिक्योरिटी बोलते बोलते नेपाल का इंटरनल अफेयर्स में घुस आएगा, चाइना का नेपाल का पूरा एरिया कब्जा लेगा, क्योंकि चाइना का काम ही वही है, एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी। ओके, तो जब चाइना नेपाल के बगल में आ जाएगा, नेपाल में आ जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग का तो घर में ही घुस आएगा, हम लोग का बस दरवाजे में खड़ा है, अभी तो फिलहाल गेट पे है, लेकिन वो बाद में क्या हो जाएगा? दरवाजे तक आ जाएगा। तो इट डायरेक्टली इंक्रीजेस इंडिया कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न्स। ओके, सो यहां पे क्या है और एक चीज, वी ऑल नो दैट चाइना हैज गॉट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू कंट्रोल द एक्सपांशन ऑफ चाइना's इन्फ्लुएंस इन इंडिया's नेबरहुड। पैसा ज्यादा है, कहीं पे भी कुछ होता है, ले ये पैसा ले ले, खत्म। तो उन लोग का वो एटीट्यूड है, लेकिन हम लोग तो ऐसा पैसा फेंक नहीं सकते, वी आर ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री। हम लोग इतना पैसा जहां तहां दे नहीं सकते कि नेपाल, बस नेपाल बोलता है कि हम लोग को खाने का नहीं है, हम लोग खाना दे सकते हैं, लेकिन हम लोग खाने के साथ पैसा नहीं दे सकते। लेकिन चाइना क्या करेंगे? खाना भी देगा, पैसा भी देगा, उल्टा कपड़ा खरीदने के लिए ले लेगा, चल घर बना ले तू, इस पैसे से इतना पैसा दे सकता है। So therefore, ये strong financial resources is also a very good concern of India towards Nepal. So therefore today, because we know that इसका जो हम लोग का like previous prime minister था नेपाल का, he was very much pro China, but today Deuba, he is very much directly pro India, and because of such number of things, we have seen that the China's dominance in Nepal is today not as such just during the time of even the KP Sharma only. तो अभी हम लोग का रिलेशन ठीक है, लेकिन फिर भी इन सम पॉइंट ऑफ टाइम जब इंडिया से उन लोग को बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, तो दे डायरेक्टली गो फॉर चाइनास, फॉर विच देयर इज डायरेक्टली $1 एलियन उन लोग ने क्या दिया? असिस्टेंस दे नेपाल, जस्ट टू सॉल्व देयर रेस्पेक्टिव इंटरनल प्रॉब्लम्स। हम लोग भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग इतना नहीं दे सकते। ओके, हम लोग कितने को देखें? पाकिस्तान है उस तरफ, नेपाल है उस तरफ, भूटान है इस तरफ, बांग्लादेश है, श्रीलंका है इस तरफ, तो हम लोग को बहुत सारा देखना पड़ता है। तो वी आर नॉट सो मच ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इन मनी ऑन इकोनॉमिकल टर्म्स टू डायरेक्टली हेल्प ईच एंड एवरी कंट्री फॉर देयर रेस्पेक्टिव इंटरनल अफेयर्स। लेकिन यहाँ पे चाइना आके कूद जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत ले लो, अपना सॉवरेन कंट्री है, थोड़ा बहुत तुम ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं, वी विल नॉट अलाउ नेपाल टू डायरेक्टली फॉल इन द डेप्थ ट्रैप पॉलिसी ऑफ चाइना। तो ये एक पर्टिकुलर न्यूज है अबाउट चाइना's असिस्टेंस टू नेपाल। ओके, कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज द एडिटोरियल ब्रेकिंग अ टैबू। ओके, इसमें क्या आता है? जनरली इट सेज अबाउट द इंडियाज alignment towards from a non-alignment policy towards a multi-alignment policy.
Okay, today if you see that while the Cold War between the US USSR जब चल रहा था, and it was directly shaking the international politics, okay, in the initial 2 decades, तो उस टाइम बहुत सारे कंट्रीज को, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, वो लोग को बोला था कि आप एक पार्टी को चूज करो, आइदर यू गो फॉर यूएसए, आइदर यू शुड गो फॉर यूएसएसआर। लेकिन इंडिया सहित और 2-3 कंट्रीज है, बी इट खाना, ओके, बी इट इंडोनेशिया, ओके, ऐसे ऐसे 2-3 कंट्रीज है हु डायरेक्टली ऑप्टेड फॉर द अलाइनमेंट कि हम लोग एक में भी नहीं, किसी में भी नहीं जाएंगे, वी विल डायरेक्टली मेक आवर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज, हम लोग इंडिपेंडेंटली लिखेंगे। ओके, सो देयरफॉर यू कैन सी दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दो इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस नॉन अलाइन पॉलिसी इन यूगोस्लेविया इन 1961, लेकिन उसके बाद ही चाइना ने हम लोग को धोखा दे दिया। 1962 में क्या हो गया, चाइना डायरेक्टली अटैक्ड इंडिया, एंड फ्रॉम 1962 टिल 1968 इंडिया हैज गॉट द नेशनल इमरजेंसी। तो उसी के चलते क्या हो गया, वी कैन सी दैट we have got various problems because at that point of time we are not so much of self sufficient with various number of equipments as well as technology, हम लोग के पास मनी पावर भी नहीं था, उल्टा पूरा कंट्री पॉवर्टी में चल रहा था। फिर 1963 के अराउंड, 1965 1963 के अराउंड, we can see that even our most prominent leaders directly they died, okay, even in Tashkent our second prime minister Lal Bahadur Shastri, he died in some of the circumstantial instance। तो तब से लेके हम लोग थोड़ा बहुत रशिया के साथ इंक्लाइन होने लगा, क्यों, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान वाज इन वेरी मच फेवर ऑफ यूएसए, यूएसए पाकिस्तान को बहुत चाहता था। ओके, सो इसीलिए वी शुड हैव बीन फेवर्ड टुवर्ड्स द यूएसएसआर। ओके, और यूएसएसआर ने ऐसा नहीं कि हम लोग को हेल्प नहीं किया, हम लोग को बहुत बार हेल्प किया, 1971 में जैसे देख लो बहुत बड़ा हेल्प किया था। लेकिन टुडे वी आर अ मल्टी अलाइन कंट्री। आज अगर हम लोग यूएसए के साथ भी डील कर रहे हैं तो हम लोग रशिया के साथ भी डील करेंगे। And today's India's current foreign policy is based upon some of the 5 principles। ये 5 principles क्या पता है? ये पहला प्रिंसिपल है सम्मान, that is respect for every nation's and sovereignty। सेकंड होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, सम्मान पहले आता है। सेकंड होता है संवाद। ओके, संवाद का मतलब क्या है, ग्रेटर एंगेजमेंट विद ऑल कंट्रीज। थर्ड में क्या आता है, सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब सिक्योरिटी, दैट इज इंडिया इज अ वेरी रेस्पॉन्सिबल पावर, नाइदर एग्रेशन नॉर एडवेंचरिज्म एक्सिस्ट इन इट्स पर्टिकुलर डीएनए। हम लोग ने कभी किसी एक देश को एनेक्स नहीं किया है, कभी हम लोग का यहाँ पे मिलिट्री कू नहीं हुआ है। ओके, सो हम लोग का क्या है, सुरक्षा इज द मेन, दैट इज द सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न। फिर आता है समृद्धि। समृद्धि में क्या है, इट्स डायरेक्टली अ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। फिर आता है संस्कृति, लास्ट में, दैट इज द फर्स्ट वन, संस्कृति एंड सभ्यता। Okay, sabhyata means the persuasive reach of cultural values anchored in a philosophy which believes that the world is a family। Okay, so the whole world is directly a family for us। Okay, vasudeva kutumbakam, the whole world is a family। So we have directly made our particular progress towards all such number of policies when we are dealing something with the foreign policy। So today we have to directly break the taboo that India is not more a non-aligned nation. India is today a multi-aligned, because we all know that in international diplomacy, in foreign diplomacy, there is no permanent friends, there is no permanent foes। We only have got what? Permanent interest। आज अगर इंडिया का इंटरेस्ट रशिया के साथ मिल रहा है, देन वी विल गो फॉर रशिया। आज अगर यूएसए के साथ मिल रहा है तो हम लोग यूएसए के पास भी जाएंगे। तो देयरफॉर वी राइट फ्रॉम 1947 टिल टुडे, जब हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज करने वाले हैं दिस 15th of August, हर घर तिरंगा हम लोग लहरा रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू डायरेक्टली ब्रेक द टेबू। वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट, वी हैव टू बी सॉवरेन in the foreign policies that we directly take upon। Okay, so therefore in the very first things we have to even see our neighborhood first policy। इसलिए हम लोग strengthen ties किसके साथ करना पड़ेगा, नेबरहुड के साथ भी करना पड़ेगा। we should directly think beyond geopolitical events। ओके, फिर हम लोग अप्रोच करेंगे किस चीज में, हम लोग डायरेक्टली चाहेंगे कि हम लोग एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स में एंट्री मिले, यूएन परमानेंट 5 में हम लोग को एंट्री मिले, तो हम लोग को बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टस है। तो इस टैबू को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। So that is the thing that is directly associated with this respective thing that is known as breaking the taboo, that India going in from a non-aligned nation towards a multi-aligned nation on the basis of its respective approach, on the basis of its respective commitments towards the whole world being Vasudeva Kutumbakam, that is the whole world being the family। Okay, so ये एक respective analysis है with the thing
of India going in from non-alignment towards multi-line. Okay, so इसी के साथ today we have ended the discussion. These are the 5 questions which you need to attempt, and particularly one mains question. Okay, so thank you for today. We'll all meet tomorrow with the same type of analysis with some of the different topics. Okay, so thank you for today. Jai Hind.